क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टू प्रिजर्व लाइफ, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, ऑप्शन सी टू प्रमोट रिकवरी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, all of the above. So the aim of first aid is to preserve life, to prevent further harm and to promote recovery. Question number 2, which of the following does not stand for ABC of first aid? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एयरवे, ऑप्शन बी ब्रीदिंग, ऑप्शन सी ब्लीडिंग एंड ऑप्शन डी सर्कुलेशन। सो फर्स्ट एड में ABC स्टैंड करता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के लिए। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्लीडिंग इज नॉट स्टैंड फॉर ABC of first aid. Question number 3, a bandage is used to option A control bleeding, option B hold dressing or splint in position, option C restrict movement of body parts and option D all of the above. So the right option is all of the above. A bandage is used to control bleeding, hold a dressing or splint in position and restrict movement of a body part. Question number 4, traction splint is used specifically for option A spine fracture, option B femur fracture, option C fracture of tibia and fibula and option D fracture of radius and ulna. So the right option is option B, femur fracture. femur fracture में ही traction splint यूज की जाती है। Question number 5, collar and cuff cinch is used to support option A forearm, option B hands, option C wrist only and option D whole of the upper limb. So the right option is option C, wrist only. Question number 6, a casualty is seriously injured and has to be removed immediately from the site. Which of the following method will you use if no help is available? So question को पहले समझते, इसमें पूछ रहा है कि कोई पर्सन जो सीरियसली इंजर्ड है और उसे डेंजर साइट से हमें हटाना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रैडल मेथड, ऑप्शन बी ड्रैग मेथड, ऑप्शन सी ह्यूमन ट्रस्ट मेथड एंड ऑप्शन डी पिक अप बैक मेथड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ड्रैग मेथड, क्योंकि ड्रैग मेथड इज यूज्ड वेयर द पर्सन इज अनेबल टू स्टैंड एंड मस्ट बी रिमूव्ड क्विकली फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ डेंजर। Question number 7, in a hemorrhage, blood is dark red in color and flows steadily. It is likely a bleeding from option A artery, option B vein, option C capillary, option D both B and C. So the right option is option B, vein. Question number 8, which of the following is the last resort to control external bleeding? So the option is A, direct pressure, option B, elevation above the level of heart, option C, use of tourniquet and option D, use of a pressure point. So the right option is option C, use of tourniquet. Question number 9, if the break in the bone is incomplete in a fracture, it is called option A, communicated fracture, option B, green stick fracture, option C, angulated fracture or option D, impacted fracture. So the right option is A, green stick fracture. It is incomplete fracture where the bone bend and crack but does not break completely. So it is more common in children due to their softer and more flexible bones. Question 10, which of the following is incorrect during care of upper jaw fracture? Option A, clear the airway, option B, treat any mouth wound, option C, place hot compress over the injured area and option D, shift the casualty to hospital. So here asking about the incorrect during the care of upper jaw fracture. So the right option will be option C, place hot compress over the injured area. Hot compresses should be avoided in fractures as they can increase swelling and worsen the injury. Instead, a cold compress or ice pack should be used to reduce swelling and pain. Question number 11, a casualty has fallen from a height on his feet and complains pain in back and irregularities felt on his back and there is loss of control over limbs. So he is likely to have option A, fracture of spine, option B, fracture of hip, option C, dislocation of hip or option D, fracture of pelvis. So the right option will be option A, fracture of spine, because a fall from a height landing on the feet can transmit force up the spine, potentially causing a spinal fracture. Symptoms like back pain, irregularity felt on the back, and loss of control over limbs suggest spinal cord involvement.
क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ अ बर्न रिजल्ट इन ब्लिस्टर ऑन अ स्किन इट इज़ कॉल्ड, अगर बर्न होने से स्किन पे ब्लिस्टर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ए माइनर बर्न, बी फर्स्ट डिग्री बर्न, सी सेकेंड डिग्री बर्न, डी थर्ड डिग्री बर्न. So the right option is second degree burn, because a second degree burn affect both epidermis or dermis, causing blister, redness, swelling and pain. Question number 13, which of the following body surface area does not come under the rule of 9 फॉर बर्न? सो बर्न का एक रूल है, रूल ऑफ 9. सो उसमें पूछ रहा है कौन सा बॉडी सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है. सो ऑप्शन ए द हेड एंड नेक, ऑप्शन बी अपर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी द जेनिटल रीजन, ऑप्शन डी द चेस्ट. सो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द जेनिटल रीजन, क्योंकि द रूल ऑफ 9 इज़ यूज एस्टिमेट टोटल बॉडी सरफेस एरिया affected by burn. It assign head and neck 9%, each upper extremity 9%, chest 18%. So however the genital area is not included on the rule of 9, but it assign 1% as total body surface area separately. Question number 14, which of the following symptoms are due to food poisoning? Food poisoning के वजह से क्या क्या symptoms हमें देखने को मिलते हैं? So let's see the options. Option A nausea and vomiting, option B abdominal cramps, option C diarrhea and fever, and option D all of the above. So food poisoning के cases में ये सारी symptoms दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Question number 15, which of the following checks of the casualty is given the first priority? Means emergency situation में first priority किसे दी जाती है? So option A pulse and circulation, option B bleeding, option C airway and breathing, and option D unconsciousness. So the right option is option C airway and breathing, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में द ABC अप्रोच एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन फॉलो की जाती है. इफ़ द एयरवे इज़ ब्लॉक और द पर्सन इज़ नॉट ब्रीदिंग तो इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो सकता है विद इन अ मिनट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. Question number 16, a casualty has cool and moist skin. It is possibly due to option A shock, option B bleeding, option C loss of body heat, or option D any of the above. So the right answer is option D any of the above, because shock reduce blood circulation and cause cool and sweaty skin. Bleeding, severe blood loss can lead to shock and resulting in cool and clammy skin, and loss of body heat means exposure to cold causes blood vessels to constrict, leading to cool skin. Since all of these conditions can cause cool and moist skin.